Hello, friends, and welcome back to Edureify YouTube channel. I hope you all are doing well. So, Edureify is in front of you with its daily practice online mock test. So, as you all know, that we are providing 15,000 plus important questions with answers and explanation from all the three subjects that are physics, chemistry, and mathematics, which are covered in JEE Mains 2022 examination. So, without wasting a single minute, let's get into the video. So, as you can see, we have three sections: learn, practice, and online test. So, we are going to appear for the online mock test for JEE Mains. So, let's select our exam. So, I am selecting subject maths and chapter arithmetic progression. सो जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन सो दैट फर्दर हम जितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप भी हमारे साथ उस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकें और अपना एनालिसिस कर सके परफॉर्मेंस का। सो एज यू कैन सी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं। चलिए अब हम लोग अपना टेस्ट देते हैं। सो आप यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं या सिंपली गूगल से साइन इन कर सकते हैं। So there are 15 number of questions and there is a time limit. Within this time limit, you have to complete all of your 15 questions. So first question is the first, second and last terms of an AP B respectively, then its sum will be, so A, B, C, D. These are the four answers. So whichever is correct, click on it, save and next. The sum of the first and third term of an arithmetic progression is 12 and the product of first and second term is 24. Then first term is 4168. So the correct answer is, let the sequence A1, A2, A3 till AN from an AP, then this. So the correct answer should be, for numbers are in arithmetic progression, the sum of first and last term is 8 and the product of both middle terms is 15. The least number of the series is 1, 3, 4 and 2. 4. The sum of first n natural numbers is, so जल्दी हरी अप, वी हैव टू कंप्लीट ऑल 15 क्वेश्चंस एंड जिसको भी देखना है कि हम जो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका सोल्यूशन सही है और अगर सही है तो उसका डिटेल्ड सोल्यूशन क्या है। सो प्लीज़ अभी अपने लैपटॉप पे edurify.com पर लॉग इन करिए, मॉक टेस्ट लीजिए और साथ साथ अपना एनालिसिस स्कोर चेक करते जाइए। So the sum of n terms of an AP is this and T is this, then M. सो दिस वे हम लोग कर सकते हैं एंड जिसने अभी तक एड्यूरीफाई हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाए, एड्यूरीफाई द लर्निंग ऐप वहाँ से डाउनलोड करे, इंस्टॉल करे अपने मोबाइल फ़ोन्स पे और जहाँ पर भी है वहीं से इसको यूज़ करना शुरू कर दे। सो अब बहुत ही कम टाइम बचा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हम लोग इस समय करेंगे उतना ही अच्छा हमारा स्कोर इम्प्रूव होगा। नो नीड टू टेक एनी टेंशंस, एनी वरीज, एनी स्ट्रेस, जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट एंड डू योर रिविजन। सो एड्यूरीफाई करो, पढ़ाई करो। थैंक यू।